T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today our topic is related with three kinematic equation of a motion. This type of the question generally asked in your examination, but most of the students they skip this question because of its difficulty. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है स्किप कर देते, छोड़ देते. क्यों? बिकॉज दिस क्वेश्चन इट इज अ very hard as compared to the other question for the some students. अभी ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से अलग तरीके से पढ़ाने वाले बताने वाले हैं, जिसके वजह से आपके उस पर कोई भी नौबत नहीं आएंगे कि आपको ये स्किप करना पड़ेगा. Whenever such a type of the question that will be asked, then at that time you will definitely solve this type of the question, that is the three kinematics equation of a motion. Now this is a these are the three kinematics equation, and that we are solving it by a graphical method. हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? We are solving it with the help of the graphical method, and so for that we have drawn here the two axes, x and the y axis, and one body is there. One body is performing a uniform motion, and that body is moving with from one place to another place with the uniform acceleration. As it is the uniform acceleration is there, then you know that there is a equal is there, means equal velocity in equal interval of the time. And for studying this you must have a knowledge of acceleration. आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का नॉलेज ये रहना बहुत आवश्यक है. एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो फॉर दैट वी हैव कंसीडर दिस टू. नाउ हियर one body is performing a motion, and that is moving from one place to another place with the uniform acceleration. अभी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमको मालूम है कि ग्राफ जो रहने वाला है, ये ग्राफ कैसा है? इट विल बी द स्ट्रेट लाइन. ग्राफ कैसा रहेगा? ये स्ट्रेट लाइन रहेगा. यदि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, दैट बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, then at that time what will be the graph? That graph will not be the straight line. अभी ये जो है straight line है, it means that it is moving with that the uniform acceleration. Now that body has the initial velocity. कौन सी भी बॉडी जो है मूव होती है, कैसी होती है? It starts with that the initial velocity. It moves with that the initial velocity, and that we have considered it is the u. हमने क्या लिया है कि u is the initial velocity, and small v is the final velocity. Small v जो कैसा है ये? It is the final velocity. Now you see here, we have to find out a first kinematic equation. We have to find out the first kinematic equation, that is now we are calculating three kinematics equation for the various three types of that the cases. It is the velocity time relation. velocity time relation.
नाउ यू नो दैट द एक्सेलरेशन जो कैसा है, इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन कैसा है, इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, मीन द फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity. Here we are considering a, it is equal to change in the, a is equal to change in velocity divided by the time, because it is the rate of change of velocity. अभी चेंज इन वेलोसिटी है, निकालना है हमको. अभी यहाँ चेंज जो है निकालते हैं कभी भी, तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. में फाइनल वेलोसिटी इज द v एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज द u. सो इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t. इट इज a, therefore you make the cross multiplication, so it will be here at is equal to v minus u, therefore v is equal to u plus et. V is equal to u plus at is the first kinematic equation. Now you see the another equation, kinematic equation for the distance time relation. Now you see here, you consider the displacement, not the distance. Time relation. अभी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के लिए आपको क्या कंसीडर करना है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट वी ऑलरेडी कंसीडर. इट मीन्स दैट दिस डिस्टेंस इज द u, and this distance is u, this is also the u, because it is a rectangular portion is there, and according to the property of rectangle, opposite sides are parallel and the congruent. ये जो v है, this distance is the v is the, means CO is the V, and what about this, DO is the U, and we have to find out the distance DB. DB हमको निकालना है कि how much that body has covered the distance. Distance जो है हमको निकालना है. Now use for that you consider area. You have to consider this area, means DOEB. You have to consider the area of a quadrilateral. Quadrilateral एक जो बनने वाला है इसके वजह से, तो उसका हम एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ दैट द क्वाड्रिलेटरल, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट द बॉडी. नाउ यू सी हियर, इन quadrilateral OEBD, OEBD में देखिए. Now this is the one type of the quadrilateral, and this quadrilateral is made up of that the two types of the figure. कितने फिगर है उसमें? दो फिगर है. You observe it very carefully. Means this one and this one. Means you have to find out the area of that the quadrilateral. Therefore, area of a quadrilateral OEBD is equal to area of this rectangle OEAD plus area of a triangle DAB. एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया. अभी रेक्टेंगल का एरिया हमको मालूम है, इट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो अभी देखिए, नाउ यू कंसीडर दिस रेक्टेंगल DAEO और OEAD. अभी ये जो है ये लेंथ है इतनी,
OE. OE is the how much the distance is there? It is nothing but the T. So you see here, this distance multiplied by this distance. How much is this distance? It is the U. This one distance. ये वाला इतना distance कितना है हमारा? U means we are applying a formula of a area of a rectangle. It is OE. It is nothing but the T into this breadth. It is nothing but the U plus area of a triangle. एंड दिस ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल. अभी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम है, कैसा रहता है? हाफ बेस इंटू हाइट. इट इज हाफ इंटू बेस. ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है. दिस इज द बेस मीन्स द डीए. ये डीए जो है ये बेस है. डीए इट इज नथिंग बट द ओई बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. सो ये जो डिस्टेंस है टी इंटू दिस BA. अभी ये BA जो है ये कैसे निकालेंगे ध्यान में रखिए. दिस वन वी वांट ओनली द BA. पूरा है हमारे पास में ये V इतना है U मीन BA. इट इज नथिंग बट वी आर राइटिंग एट फर्स्ट इन दिस वे. इट इज UT. दिस इज द एस प्लस ऑफ हाफ इंटू T इंटू BA. देखिए BA रहेगा हमारे पास में. इट इज V माइनस U. BA कैसा रहेगा? ये पूरा है V, उसमें से U चला जाएगा तो इट विल रिमेन हियर द AB. कितना रहेगा? AB है, मीन्स इट इज द V माइनस U. नाउ आफ्टर दैट यू सी अवर फर्स्ट इक्वेशन. हमारा पहला वाला इक्वेशन देखिए, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. इट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT. V इज इक्वल टू U प्लस AT है. अभी ये वाली वैल्यू देखिए, V माइनस U एंड दिस V माइनस U. यू आर सीइंग दिस V माइनस U एंड दिस V माइनस U. यू रिप्लेस इट. V माइनस U की कितनी कीमत है यहाँ? AT है. सो यू राइट हियर UT प्लस ऑफ हाफ इंटू T. V माइनस U की कीमत निकाली हमने. इट इज AT. सो इट इज इक्वल टू UT plus half A into T square. This is our second kinematic equation. ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. दिस इज so we have seen here two equations. First is the first kinematic equation, that is the V is equal to U plus AT. After that second S is equal to UT plus half AT square. अभी ये वाला जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल है देखिए. एक है S मीन्स द डिस्टेंस. आफ्टर दैट इनिशियल वेलोसिटी T is here, A is here, means A, T, U and S. Four variables are there. Out of the four variables, if you know the three variables, you can find out the any one variable, that is the unknown variable. Now we are going to find out the next third kinematic equation. Now we are finding out the third kinematic equation, that is for displacement velocity relation. It is displacement velocity relation. It is for displacement velocity relation. अभी इस displacement velocity relation इसमें क्या है? यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. हियर वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस. अभी हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द
I. Now for that we have to consider the same graph. हमको वही प्रकार का ग्राफ जो है क्या कंसीडर करना है. ये देखिए, consider the graph that is the quadrilateral DOEB. Now consider this quadrilateral. Now carefully you observe it, you will find that type of the quadrilateral is nothing but the trapezium. ये कौन सा quadrilateral है? It is from the family of the trapezium. Means area of trapezium DOEB is equal to area of a trapezium is this. You can write here area of trapezium. अभी ट्रेपेजियम का एरिया हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं हम? इट इज द हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू द हाइट. ये है, दिस इज द ओडी इज पैरेलल विद द बीई, मीन्स हाफ into sum of parallel side. Which are the parallel side? DO plus another parallel side, this parallel to this, means it is the EB into height, means this one is the height, it is the DA. The distance we are calculating. We are calculating now the distance. Now you place the values here. A is equal to DO. What is DO? You see here, DO is nothing but the U plus. What about the EB? EB देखिए, now you place all the values here. is equal to half into U plus. What about the EB? EB देखिए, अभी EB कैसा है? ये EB it is nothing but the, this is nothing but the complete V into DA. DA निकालना है हमको. DA is how much? It is nothing but the T. ये है हमारा T. Now after that we know that V minus U divided by A is equal to T. Now you have to find out the value of T here. So it will be, so we are going to find out the value of T. T आ जाएगा यहाँ इस प्रकार से, हाफ into U plus V. T की वैल्यू है हमारे पास में V minus U divided by A is half U plus V. We are writing V plus U into V minus U divided by A. So it is half V plus U into V minus U. Apply a identity here. It will be the V square minus U square. A. Now you make a cross multiplication. It will be the 2A is equal to V square minus U square. You transfer this. It will be here 2A is plus U square is equal to V square. So V square is equal to U square plus 2A is. So it is the third kinematic equation. So these are the three kinematics equation, and which are the very useful for finding out the answer, which are related with that the motion. Motion से related जो भी कुछ है प्रॉब्लम्स है, उससे हम क्या अननोन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते. And in this way we have seen, we have calculated the value of V
and the S and the A by using a graphical method. If you have any type of the question, then you may ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.